Hey, listener, and welcome to another podcast by Life Through a Learner's Eye. This is hopefully the 13th episode, and the date today is 14th Feb. Yep, it's that day. It's the days for, the Valentine days. And, I don't know why I said that so secretly. I mean, yeah, it's that day, and we live in, हम जिधर रहते हैं इस चीज़ को लेकर बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है. एक जमात है वो कहती है कि ये हराम है, दूसरी जमात है वो सेलिब्रेट करती है, कहते हैं नहीं तो हम तो सेलिब्रेट करेंगे. खैर, विल नॉट गेट इनटू दैट कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज आवर टॉपिक इज नॉट दिस. आई जस्ट वांटेड यू टू नो अबाउट इट. So today's podcast, you must have read the title. Today's podcast is some career counseling. So I'm going to, if you allow me, I'm going to counsel you on your career, on your future career. So I need you to have a bright future. Really, I care for you deeply. Just like my school cares for me, my college cares for me. I'm just kidding. I don't care. I care for you, and I'm not going to really, all of you listeners, I'm not going to counsel you on anything because I don't know shit. I don't know you, so I'm not going to counsel you. But we are going on a really beautiful new trend that's been created, and we are going to point out the mistakes there. I mean, it's all of it is a mistake basically, but we are going to just explore the reasons why. Career counseling. This first time when I heard it, it was in college. It was in my school, my school term. कि college वाले आए थे, कुछ colleges वाले आए थे, to get students, and they said that we have career counselors and we counsel career. We have motivational speakers. Motivational speakers की तो खैर अच्छी तरह हमने सही उनको पकड़ा नहीं, मतलब I mean सही तरह हमने उन पर बात की हुई है कि why they are so wrong. Motivational lectures होते हैं, और ये वो I recorded a podcast, और या मैंने कहीं पे inside a podcast I talked on this topic. But this time career counselors, I never really met a career counselor until a few days ago, or I never ever believed that. I mean, जिस तरह जब मैंने सुना था कि motivational lectures होते हैं, I mean, like really, what are the motivational lectures that there are? I mean, like the motivational speaking, these guys do motivational speaking as well. There's a post for motivational speaker in college, और career counselor के लिए likewise कि career वो counsel करते हैं. मुझे ज़रा भी यकीन नहीं था career counselors पे, literally zero. And I didn't test in them, but I know that it was literally zero. Actually, I remember maybe in 9th or 10th, there was a topic in English book, career counseling or something. तो वो पढ़ के तो बिल्कुल ही मतलब ज़ीरो, कुछ भी जो हल्का सा जो 0.1% था वो भी ख़त्म हो गया कैरियर काउंसलर्स पे. तो एक्चुअली आई थिंक दैट दिस इज़ अ न्यू ट्रेंड. मैंने अभी सुना है स्कूल, तो मैं 10 साल से जा रहा हूँ जब से बच्चा हूँ. ये शायद ये हायर लेवल्स पे होता हो, बट आई थिंक दैट दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर मी, और आई रियली वांट टू ब्रेक इट डाउन. कुछ दिन पहले कल या परसों कैरियर काउंसलिंग की क्लास हुई. हम सब क्लास से shifted to another room. We are just like horses being shifted to another room. We shifted into that stable. We left this stable and we shifted into that stable. और वहाँ पे जाके एक टीचर वो क्लास में आई, और उन्होंने काउंसलिंग की एक्चुअली आप सबकी. और I'll try to I'll try my best कि मैं आपको बताऊं कि उन्होंने कैसे बोला. वो एक तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि why do these people एक मोटिवेशनल स्पीकर और दूसरा, मैं देखता हूँ ये जो टॉपर्स हैं इनके साथ भी ऐसे ये कॉमन बात है, वो बड़ी लिमिटेड मूवमेंट करते हैं. आई मीन दे डोंट यूज़ देयर बॉडी टू देयर फुल एक्सटेंट, दे मूव वेरी लिमिटेडली. और ये इवन प्रोफेसर्स एज वेल, आई मीन जो सब कुछ प्रोफेसर्स हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं, अच्छी बात है. क्योंकि ज़्यादातर प्रोफेसर ये हैं कि दे डोंट नीड देयर बॉडी, दे जस्ट नीड देयर माइंड. आई मीन डोंट यू अंडरस्टैंड द माइंड बॉडी कनेक्शन. आई मीन जो आप बॉडी के साथ करते हैं उसका वेरी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपके माइंड पे, और वाइस वर्सा. तो
I don't know why they do this. तो वो टीचर भी ऐसी थी, doing very limited movements, speaking in a very low tone. Now I'm not criticizing her, saying that she should not. She's a human. She's a perfect human. She has the right to live any way she wants. The thing is, जो उन्होंने हमें बातें कही, तो अगर मैं आपको ना सब ये a small summary, one line summary, I'll give it to you. Here's it. Same way, same things that you have been taught by your parents, that you have listened from your parents and your teachers, are backed up by some mind science and some boggling quotes. Yep, that's it. सही वही होता है. Literally the same things. हम क्लास में गए, उन्होंने वही सब किए. एक तो सबसे पहले अटेंडेंस ली, ठीक है, कि किसी सी काउंसलिंग हम कर रहे हैं, क्योंकि फॉर देम इट्स अ रियली इंपॉर्टेंट थिंग. आई डोंट नो व्हाई. सेकेंड चीज़ उन्होंने फिर पूछा कि आपके मार्क्स कितने हैं. मार्क्स फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मार्क्स. क्योंकि मार्क्स यही चीज़ मैटर करते हैं, और कोई चीज़ हमारे लिए मैटर नहीं करती. हमारे माइंड में जो एक इंटेलिजेंट है, हमारे माइंड में जो हमने एक एल्बर्ट आइंस्टाइन ख्याल ही बनाया हुआ है, वो यही है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं. ही इज़ इंटेलिजेंट. तो सबसे पहले मार्क्स पूछे, हर बच्चे ने मार्क्स बताए. उसके बाद उन्होंने कहा कि ये रिविजन एंड टेस्ट सेशन इज़ बीन इम्प्लीमेंटेड इन आवर कॉलेज, और दिस सेशन इज़ टेस्ट ईच डे एंड रिविजन ईच डे. इट्स जस्ट रिविजन एंड टेस्ट लिटरली. तो उन्होंने पूछा कि सेशन कैसा जा रहा है, और आपको इसमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए. मीनिंग के यू शुड स्टडी हार्ड. Literally, aren't these study hard, work hard, and don't use your mobile phone much, and don't watch TV, don't go out with your friends much. और इससे करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, यूनिवर्सिटी में एडमिशन अच्छा आएगा, जॉब अच्छी आएगी, पैसे अच्छे आएंगे. I mean, are these the things जो हम सुनते आए हैं? I mean, isn't कुछ something new, something exciting there? Is not. लिटरली यही चीज़ें थी. यही चीज़ें हमें कही गई. कहते हैं कि, और here's the fun part, the mind science, the power of the brain. They use this thing to always back it up. And this looks very, very funny to me. Like, really, it is funny if you really know. And I will break it to you why. माइंड साइंस में हमें ये कहा कि यू हैव अ सबकॉन्शियस माइंड. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द माइंड, कॉन्शियस एंड द सबकॉन्शियस. शी इज़ राइट देयर. एक कॉन्शियस माइंड होता है. कॉन्शियस इज, लेट्स गेट डीप डाउन इनटू दिस फॉर अ सेकेंड. Conscious is what you do and what you know you're doing. I mean, your thoughts, you know that you're thinking, you know all of this. Subconscious is like it's like a program that's running. It's in the back end. It associates your pain and pleasure with experiences. It associates what to save you from. It's like a survival tool, right? It's a program that you have written all over your life, and it operates. The habits, all these things, they are stored there. So the subconscious mind is a really, really powerful mind, and if you can learn to control it, you can control your life. तो उन्होंने कहा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है, एंड शी सेज के whatever you set your aim to, you achieve. That's right, that's true. कि जो भी आप अपने माइंड में फीड करते हैं, that comes out in the best. Your mind responds in a very clear answers. But the thing is, you have to give clear signals as well. She says that कि जब आप बुक्स खोलने बैठते हैं ना, तो आप क्या करें कि ये नहीं क्या करेंगे, आपका दिल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, क्योंकि फिर आपका वाकई नहीं करेगा, राइट. कहते हैं कि ये क्या करें कि आपका दिल कर रहा है. आई मीन, इट्स लाइक टू ट्रिक योरसेल्फ इनटू थिंकिंग. तो एक बात, तो अगर आपने वाकई पढ़ना है और अगर आप ये करेंगे तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है. मगर अगर आप एक ऐसा, चलें इस पे बात करते हैं. आई थिंक कि ये जो माइंड साइंस है, आई डोंट नो व्हाई आई यूज दिस टर्म अ लॉट, माइंड साइंस. आई थिंक दैट दिस माइंड साइंस एंड दिस school thing, they really can't go hand in hand. Because
स्कूल का फ्रेमवर्क का जो सबसे बेसिक चीज़ है, स्कूल किस चीज़ पे बना हुआ है उसका फ्रेमवर्क क्या है? इट इज़ मेड, वो एक बेसिक, बहुत ही बेसिक फैक्ट को अंडरस्टैंड नहीं करता स्कूल, और वो ये है कि ईच ह्यूमन इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट, कि हर किसी का ब्रेन हर किसी से डिफरेंट ऑपरेट करता है, हर कोई इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वे में प्रोसेस करता है, हर कोई हर किसी की नेचर डिफरेंट होती है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। और स्कूल का फ्रेमवर्क ये है कि उन्होंने एक ही चीज़ बनाई हुई है सबके लिए। आई मीन इट्स अ वन फॉर ऑल स्ट्रैटेजी, कि बस दे हैव दिस फ्रेमवर्क, दे हैव दिस बॉक्स, फॉर दे विल पुश चिल्ड्रन इनसाइड द बॉक्स एंड दे विल कम आउट ऑन द अदर साइड ऑफ इट। और जो बीच में मस्ती करे या वो भाग जाए तो वो क्या बनता है? स्कूल के लिहाज से देखा जाएगा, इफ़ वी सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्कूल, ही इज़ अ फेलियर, बट इफ़ यू रियली सी, to me he is Bill Gates or Einstein. He's a genius to me, really, because we escape the pattern there, escape the prison that we are put into, the prison of the mind. Like, it's not an actual prison, it's a prison on your mind, it's a prison on your creativity, it's a prison on your nature, on your passion, on your interests, on your life. So or mind science, whoever understands psychology understands this basic fact too, that everybody is different, and you can't just use one for all strategy there. जबकि हमने एजुकेशन, हमारी strategy for education is one for all. There's one cookie cutter and everybody has to be molded into that shape, and all the rest is cut out. This is not effective, right? And तो इसलिए psychology and schools, they can't go hand in hand. So that's why they can't really use this psychology to back up what you do. You can use it to produce results, but the thing is, if you do something that's very out of your nature, you do one thing but you deeply want to do another thing that you really love, that's your passion, will you ever perform at your 100%, at your peak state? I don't think so. I doubt that, really. And even if you do, will you ever be happy? So what's the point in using all of this and not even being happy in the end? इस जो हमारी काउंसलिंग टीचर ने ये सारी बात की, एंड में मेरा एक आई हैव अ क्लास फेलो, ही समराइज्ड इट ऑल अप इन अ वेरी ब्यूटीफुल वे. और उसने ही डिडंट डू इट इंटेंशनली, बट आई लव व्हाट ही सेड. ही सेड दैट इंसान वही करता है कि जिससे वो खुश होता है. तो मैम हमें क्या बता रही थी? नहीं, हमने एजुकेशन को बनाया हुआ ये है कि इट्स दिस, मैं कॉलेज का सोचता हूँ या स्कूल का सोचता हूँ तो मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता जाने का. एंड इट्स दिस डॉन्टिंग आइडिया कि यार जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, टेस्ट होगा, ये आएगा, वो आएगा. हमने इतना उसको कंफर्टेबल हमने बनाया नहीं एजुकेशन को, लर्निंग के प्रोसेस को. वी डोंट लव लर्निंग, एंड इट्स नॉट आवर फॉल्ट, इट्स जस्ट द फ्रेमवर्क कि जिसमें लर्निंग इम्प्लीमेंट किया गया है. तो the thing is, that's why psychology, human psychology, and this schools, this college framework can't work together until they change their framework to support it. Second thing is, जब और ये काफ़ी जगह होता है, this is not here, they use quotes from successful people to kind of motivate you, and they use it in such a wrong way. It's funny to see. वो करते क्या है कि आइंस्टाइन का कोट होगा. आइंस्टाइन, फॉर एग्जांपल, आइंस्टाइन said work is the substance to life. Work is what gives substance to life. And they'll use it and they'll tell you, okay, if you want to have substance in life, work hard, study, do this, that. But on the other hand, Einstein was of the idea that these school systems, they kill curiosity. Einstein also said that everybody is a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing this is stupid. School not only makes fish climb trees, it also makes them climb down and do a 10-mile run.
So why do you use something that Einstein says to support you? That's not authentic. That's just manipulation. Right? I don't see that as an authentic way. I see that's been manipulated into something that's not true, and even that's not practical. So why? इस तरह के काफ़ी सारे misquotes होते हैं. I mean, they'll use an example of Michelangelo. And this I'm using this example because one motivational class he used this example. Michelangelo, he was so immersed in his work, so he loved his work so much that he didn't even take care of his body while working. So हमें मैथ्स खोल के जब हमें एक वो फ्रेम हमें शुरू से एसोसिएशंस यही की गई हैं कि मैथ्स मुश्किल है और ये है और वो है और पढ़ाई भी. इफ़ यू डोंट हैव लव फॉर दैट थिंग तो हम कैसे इस तरह करें, राइट? एंड देन वी से दैट वी आर हमारे टीचर्स कहते हैं दिस इज़ अ फन थिंग, दिस इज़ अ फन अदर टॉपिक. Not a fun topic, I'm sorry. It's not a fun topic. This is another topic. And this is the millennials versus boomers. The boomers said that millennials are entitled and this and that. कि वो careless हैं. They don't really care about any other person other than themselves. They use this technology thing a lot. They use much of their time in... Actually, ये सब एक और टॉपिक है. वो कहते ही हैं कि फिर हम केयरलेस हैं और ये वो. दे जस्ट डोंट नो दैट दे हैव पुट द फ्रेमवर्क अराउंड दिस एंड दे आर मेकिंग अस वर्क. आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर लाइक रोबोट्स लिसनिंग टू देम, बट इन व्हेन वी वर जब हमसे पहले की जनरेशन वही थी. सो आई एम नॉट बहुत क्लियरली मैं एक चीज़ को नहीं कह रहा, बट विल टॉक ऑन दिस ऑन सम अदर डे. फॉर नाउ I think that this career counseling thing is nothing but manipulation. Manipulation, really I'm using that word. क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ को यूज़ कर रहे हो जो authentic नहीं है, then what will someone who really knows, someone who understands, what will he think? We are being manipulated into thinking that all of this is best for us. That's why Gary Vee, he says that this is a fake environment. School environment is a fake environment. It really is a fake environment. You're using quotes and misquoting people, all of that. Like, why? So I think career counseling, if we have to sum this up, this is सेम थिंग्स. जो बड़े मज़े की बात, लास्ट बात यह है कि उन्होंने बड़े मज़े की बात ये की कि अपनी नींद को कम करें. अब वो कहते हैं कि हर सब्जेक्ट को 1 घंटे दे. मैं पता क्या करता हूँ, आई डोंट इवन स्टडी जिसका टेस्ट है, आई डोंट इवन स्टडी दैट until the very last moment कि टेस्ट पास हो जाए. And they're saying that you should lessen your sleep hours. Get out of here. I'm not listening to you. Funny thing, funny guys, really, they're really funny little cute guys. They're just like kids. Other thing, last concluding this, the advice that I want to give you, a friendly advice. You really don't need a career counselor. You need knowledge, you need education, you need someone to model. But if a career counselor work is to tell you what's hot in the market, what's trending in the market, and you go and follow that just for the sake of money, you are making a fatal mistake, my friend. I don't want you to go for that. I want you to go for something deeper. I don't want you to have surface meaning in life. I want you to have deep meaning. I want you to go and look inside yourself. Go stand in the front of the mirror and ask yourself, what is it that you want to do with your life? What is it that you actually love doing? And reflect back on your life and reflect back on yourself. And I'm sure you will find it. I'm sure. And once you find it, act on it. I know, search for models, get the education, improve yourself. And if you think that you really want to build a career,
in the 21st century, building a career, you don't need a degree, you don't need education, you don't need anything if you want to build a career. People, this is real in the 21st century. In the year 2020, this is real. People have built their careers gaming on their mobile phones. Gaming. How much skill do you need for that? They have built their careers talking over the show, or talking over Friends, talking over each episode of Friends, making a podcast out of it. They have made their careers. So the best advice for you is, it's not from me, it's from Gary Vee. I'm not saying this all from myself. I implement on this, I act on it, I believe it, but I don't want you to think that this is me, this is Gary Vee. And if you go on his channel, if you search for him, he'll give you much better, much deep insight on this. If you want to build a career in the 21st century around, let's say for example, somebody loves the Smurfs, and if you want to build a career around them, just go and all the Smurf toys that you can find, all the Smurf movies, all the cartoons, everything, and then create a page on Instagram, Facebook, YouTube, and Radio Public, all the podcast platforms, depending on what type of medium you choose, whether it's audio, whether it's video, whether it's written form, and start putting out content, start creating content. And I'm sure in the next 2 years or 3 years, you'll build yourself a career. You'll get yourself going, you'll get yourself in the momentum. That's how easy it is to build a career. We don't need to go in for 24 years of our life to get a degree which really doesn't mean anything. It's just a piece of paper. So why go for that for so long? You can start building your career right now. And I want you to. I really want you to know yourself. And then be thyself. Know thyself and be thyself. I really hope you enjoyed this podcast. I really loved this one. I really love talking to you, and this is just not talking. If you spend these 20 minutes and you really don't reflect on your life, you have wasted your time, my dear friend. I really, really want you to be happy. I want you to be loving. So really reflect on yourself and see what you can do. What are the changes that you can make in your life right now, and how you can build a career for yourself if you want to. Just do it. I'll see you in the next episode. Till then, take care. Allah Hafiz.